Hello, sir. Hey, Shatash, how are you? Fine, sir. How Good. about you? Anji, How about you? I am doing well, thank you. Which cycle do you have? ब्रांड ठीक से याद नहीं है मुझे। ब्रांड नहीं, वो वाली गियर वाली है। नहीं नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मली सही रहती है क्योंकि गियर वाली तो ताकत ही नहीं लगानी पड़ती। बढ़िया होती है वो ट्रैकिंग के लिए। बेकार है एकदम। व्हाट इज योर यूटिलाइजेशन? गियर चेंज करो और ऊपर चढ़ना उस स्लांट पे, वो भी कितना इजी हो जाता है। यस। ठीक है जी। क्या? ऑलराइट। सो फर्स्ट, entropy changes during phase transformation. आज क्या क्या पढ़ेंगे वैसे? Entropy. और आज खत्म बस ये चैप्टर या कुछ और? यस, 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 यस। उम्मीद रिडॉक्स करते हैं शुरू कर यार। लेंगे। कौन सा लॉस? रिडॉक्स रिडॉक्स। हाँ। थोड़ा सही है। आज मैं एक्सरसाइज करने गया नहीं हूँ बिल्कुल भी, और अब जाऊंगा। So entropy of fusion. There is an equilibrium between the solid which is melting and the liquid at the melting point. ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। Yo, the heat. Yes, correct word. फेज ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी। So delta fusion S will be given by disorderliness of the liquid minus disorderliness of the solid. Products minus reactants. ठीक है। Melting point. So Tm is the melting point, where let's write each of the terms. Del. So ये जो है change in this is entropy of fusion. Sorry. So change in entropy when 1 mole of solid. So this is the entropy of fusion. या change भी लिख सकते हो if you want to write change of entropy during what is S liquid. S liquid is the molar entropy of the liquid, and S solid, molar entropy of the solid. Tm, of course, is the melting point.
बेसिकली वो जो सारे फिनोमिनाज हमने 9th में पढ़े हुए हैं उनको एंट्रोपी में कन्वर्ट कर दिया है. सो द नॉट ओनली देयर इज अ हीट, latent heat involved, but there is something else also which is over and above, which is the randomness of the system going up or down. Up, actually, in this case, solid to liquid. Similarly, you will have same second one, which is going to be the entropy of vaporization. No big deal. Delta VAP S is equal to S VAP. Remember, it's molar. These are molar. S VAP is molar. S liquid is equal to delta VAP H by TB. So now it's boiling temperature, TB. Boiling. So not only there is a phase change and therefore enthalpy change and all that, but there is also a new thing called as entropy of vapor. There is something else also, the second factor that decides the spontaneity of a reaction. Exothermic is spontaneous, yes, but there is something else which will control the spontaneity. So boiling temperature of the, in degrees, जो भी है, of the substance, which is getting converted from liquid to vapor. So I'm not writing the definition. We will use straight away because we recognize these are molar entropy of the vapor and this is the molar entropy of the liquid. TB is the boiling and then there is an entropy of sublimation. ये सब चीजें फिजिकल इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है. Physical equilibrium, what do you mean by that? Physical changes are happening, yes. These are not chemical changes so far. क्योंकि हमने जो नाम रखा है वो phase transformation है, right? But what do you mean by physical equilibrium? As in what? You mean they are getting converted into each other? हाँ, उस टाइप. Reversible मतलब? No. No. So it's one-sided, right? A spontaneous process is one-sided. ठीक. There is no change in the material. वो तो same ही रहता है. Yeah. All right. Entropy of sublimation, same thing. We can just write it as To in another over. format. Okay. Just a formula. The entropy of sublimation, sub S, is given by S VAP minus, sorry, what are we writing? दोबारा क्यों लिख रहे हैं हम इसको? Sublimation में अच्छा हाँ वेपर बन जाता है, सॉरी हाँ. So delta, not delta, so S VAP ही होगा, molar. S VAP. Yes. S VAP minus S solid, correct. And is equal to delta sublimation H divided by T, where T is in Kelvin, degrees or. Okay. So this is simple. बहुत easy है समझना इसको. No brainer because this involves only phase transformation. Okay. Okay. Let's go to the next one, which is entropy changes when the change is not a physical transformation. In processes not involving any phase transformation. Okay. So for example, it is 2SO3 gas becoming 2SO2 gas
plus O2 or PCl5 becoming PCl3 plus Cl2 gas. Gas and gas. SO3 भी गैस ही है ना? गैस है, सब गैस है, गैसियस, गैसियस एंड गैसियस लिखा ही हुआ है। तो अगर आप देखो आपका now you have two molecules, right? Two types of molecules on the right hand side. And then you have, if you see on the right hand side, the number of molecules is also has increased. So हमने पढ़ा था कल कि number of molecules अगर बढ़ेंगे तो भी वो होगा, तो 3 मोल बन गए राइट साइड पे. So there is a delta N G which is positive. 3 - 2. 1 मोल एक्स्ट्रा बना है तो randomness has gone up. PCl5 में भी you see 2 - 1. 1 मोल एक्स्ट्रा. ठीक है. What does it tell you? That there can be entropy change without phase transformation. So you can have chemical changes and you can see the quantity of the molecule has. So we are talking about quantity of molecules increasing in the below mentioned reaction, causing the increase in entropy. So positive delta S. Let me give you an example. So now you identify from your mind. Okay, so if you have a liquid substance that crystallizes into solid, what do you think will be the entropy? Will it go up or go down? Go down. Go down. It decreases. Why? Because in a solid, the ordered arrangement of constituent particles is going to Randomness happen. is less. Randomness is less. Great. Second question. The temperature of crystalline solid. There is a crystalline solid. Okay. So these are the crystalline solid. Okay. So you have a crystalline solid. जितना मर्जी बना लो यार इसको तो, है ना? ऐसे भी समझ आ ही रहा है और मत बना. Whom do you know in Tata Laveda यार? है जी. तुम किसी को टाटा लावेडा में जानते हो क्या? टाटा लेवेडा क्या है हाँ, वो? सोसाइटी. नहीं नहीं, तो ओके, नहीं ब्रोकर जानते. थोड़ी ना हो. Okay. 2. नहीं So जस्ट. temperature. Okay. Temperature of crystalline solid is 0 Kelvin and you raise it to 115 Kelvin. So what will happen to the entropy of the constituent particles? Lattice में जो ions है, what happens to the when the temperature goes up? They start vibrating. ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं अपनी जगह से ऐसे ज्यादा टेम्परेचर पे. सो दैट इट मींस द एंट्रोपी विल गो अप. रैंडमनेस बढ़ती है. यस. 3. Now 2NaHCO3. Na2CO3 plus CO2 plus H2O. Solid, gas and solid. सर ये. सोडियम बाइकार्बोनेट है भाई, देख ले. मतलब हाँ. सीधा सीधा है कि एक तो सॉलिड टू वो दिख रहा है मुझे साफ साफ. सॉलिड टू गैस तो कन्वर्जन हुई है. सॉलिड गैस, 2 गैस आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो बढ़े. इंक्रीजेस. रीजन, the moles have gone up and gaseous substances have got created. Fourth, okay, so H2 gas atomizes into 2H. इंक्रीज ही नहीं है. Double the number of particles. इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो. Double the moles body. नहीं नहीं, डबल दो. अच्छा से बढ़ गए ना इंक्रीज मोल. हो रहा है. हाँ इंक्रीज. इंक्रीज. इंक्रीज.
Okay, now it's your turn. I have answered many. You try this. ठीक है? So I'm going to change the conditions and just guess what will happen. So you have H2 and it is at 298 Kelvin, 1 atmosphere. H2, 298 Kelvin. Magic, बताओ. Think coolly first. This is the change which has happened. So you have to tell me. केस तो लिखो. Question is predict. अच्छा, okay. So H2 is H2. दोनों साइड पे कोई फेज नहीं, गैस ही मान लो. H2. Question is predict the sign of entropy. करो जी predict. फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव होएगी. So your answer is positive because you believe the pressure has gone up. हाँ जी. You have compressed it. यस. Okay. So let's say you say the randomness will go up if you bring them closer. Okay. Second, H2O, 298 Kelvin, 1 atmosphere. H2O, 330 Kelvin, 1 atmosphere. पॉजिटिव. Reason. सर बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है. Hmm. तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है थोड़ी रैंडमनेस ज़्यादा आएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट हो जाते हैं. Agreed. So second का reason I buy that. First का reason दोबारा फर्स्ट समझाओ. में सर शुड बी नेगेटिव बिकॉज प्रेशर की वजह से वो रैंडमनेस डिक्रीज होएगी. मॉलिक्यूल्स का प्रेशर की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से या घटने की वजह से? प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स हाँ, ज्यादा रैंडम होंगे. घटने की वजह से ना, इंक्रीज की वजह से वो कंप्रेस्ड कम गैस के केस में क्या होगा? कम एंट्रोपी विल गो डाउन, रैंडमनेस का कम होएगी. डिक्रीज होगी, नेगेटिव. इसमें पॉजिटिव. ठीक है. थर्ड. बताओ जी. पॉजिटिव है. आई थिंक दिस इज नो ब्रेनर. ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. गैशियस. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट नेगेटिव. फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड स्टेट. क्रिस्टलाइजेशन मालूम है क्या होती है? तो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता. सॉलिड में कन्वर्ट होता है. हाँ, मतलब उसके साथ क्रिस्टल बन गया ना, एक तरह हाँ से. ब्लू कलर के जो होता है. जी. नेगेटिव है. ठीक है. मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. ओके. फिफ्थ. लैटिस. टू है, नहीं टू. ठीक है. गैस. अब इसमें मैंने एक साइन डाल दिया. तो इक्विलिब्रियम. बट स्टिल यू कैन प्रिडिक्ट समथिंग. सो इफ यू सी लेफ्ट साइड पे दो मॉलिक्यूल्स हैं. तीन, सॉरी. तीन मोल है. राइट पे दो है. सो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आल्सो एग्जिबिट एंट्रोपी चेंजेस. कल हमने पढ़ा था ये. हाँ. तो देखो, इसमें रैंडमनेस कम हो रही है. नेगेटिव. फॉरवर्ड डायरेक्शन की, विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. ठीक है. ओके. So calculate the entropy change. Question is problem number 1.
पेज नंबर 2 पे हूं मैं. Problem number 1. You have to find the delta S for a process that involves 1 mole of solid ice. Okay. Uh, हम्म. which is at 273 Kelvin melting point to liquid हम्म. water. 273 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट. 0 degree. या So it फ्रीजिंग पॉइंट converts नहीं होता from, वो? hmm, yes, 0 डिग्री फ्रीजिंग नहीं होता? freezing. So you have solid ice getting converted to liquid water at 273. So it's melting of ice. The latent heat of fusion is given to be 6025 joules per mole. This is latent heat of fusion available to you. Question is find the entropy change during this phase transformation. Without delta S for phase transformation, which means you know the सर delta इट H वुड of, बी 6025 yes, अपॉन 273. correct. So तो delta यूनिट क्या होती S, है इसकी वैसे एंट्रोपी की? use dimensional analysis. इस पे डायमेंशनल एनालिसिस. So 6025 is joules per mole, right? And then on top of that, again, dividing by temperature. ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये इतने मिनट लेवल टाइम पे पे. नहीं यार. इतने लेवल पे नहीं, बस इतना ही काफी, यूनिट लेवल पे ही. जूल पर मोल पर केल्विन यार, काफी अच्छा. नहीं है. Okay, so problem number 2. Calculate the entropy change in the conversion of 1 mole of liquid water at 377. So temperature is 373 Kelvin. At the same temperature, so 373 is a boiling point of water. So it gets converted from 1 mole of liquid. 1 mole दिया हुआ है. It is 1 mole. So molar, whatever you will calculate will be molar entropy change. So liquid changes into steam, obviously vapor. At So you have to calculate, and it is given delta H, the heat exchange, enthalpy change during the reaction is given to be 2.25 2.257 kilojoule per gram. वेपराइजेशन वाली है. हाँ जी. डेल्टा इज वेप सो वेप. ठीक है, पर ग्राम. सर, जी बोलो. पर ग्राम है. Yes. You've been given 1 mole of water, which means 18 grams. So convert delta H first into kilojoules. पूरी बिल्कुल. वेपराइजेशन में 1 ग्राम कितने हैं, तो 18 ग्राम के कितने लगेंगे? 2.257. Total heat required to vaporize 18 grams of water. 18 multiplied by 2.257, ऐसे लिखा जाता है पेपर के अंदर, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए.
40.626 किलो जूल्स। टोटल। हाँ ठीक है, हाँ कंटिन्यू। निकालना तो डेल्टा एस है। फॉर्मूला लिख देना पेपर में, सीधा डिवाइड डिवाइड नहीं करना। फर्स्ट टेल देम व्हाट कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग, देन डिवाइड। एंट्रोपी चेंज, यस, दिस इज द वे एक्चुअली यू राइट। पता दो तुम कर क्या रहे हो। हाँ, बढ़िया। जस्ट इंश्योर दैट यू आर टेलिंग देम इट्स वेपर, वेपराइजेशन। बढ़िया बढ़िया। टेम्परेचर क्या था? बॉइलिंग का 373। 0.1089। ठीक है। पीडीएफ फंस गई मेरी, प्रिंट करने दी थी। प्रिंटर का कहाँ पे लिखा हैगा? अगर सेटिंग में, अगर प्रिंट टास्क मैनेजर में जाओ तो अलग से लिखा आता है। ये मुझसे पूछ रहे? एंड टास्क करना हो तो। एंटास आ तो गया क्या? ये मैंने खुद करा है मेरा, क्योंकि एक प्रोसेस चल तो रही है। एंड टास्क कर रहा हूँ मैं उसका। चलो पीडीएफ बंद हो गई सारी। ठीक है, हो गई तो हो गई। प्रिंट लेना था क्या? नहीं आया, नहीं 2 घंटे हो गए, बंद कर दिया। वो तो सर, पर क्यों नहीं? प्रिंटर काम नहीं कर रहा था क्या? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। हो गया सॉल्व ना। हम्म। ठीक है, बढ़िया। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बोल रहे हैं जी कोई ओटीपी आया है, लेकिन आया तो नहीं है। ठीक है।
अरे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये क्वेश्चंस, मतलब हाँ, है तो। ऐसे कुछ दिखाने की एंट्रोपी नाम का शोर मचाया हुआ था, एंट्रोपी, पता नहीं क्या निकलेगा और निकला क्या। इससे ज्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाती है। हम्म। बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा मुश्किल थी इससे। बॉन्ड एंथैल्पी ने तो पूरा वो बना दिया हमारा। पोपट। पोपट मीन्स व्हाट, अ फूल? हाँ जी। ओके। एक क्वेश्चन तो होता भाई, एक। किस चीज का? कौन सा, किस चीज का क्वेश्चन? एक मिनट, पूरी बुक में एक वर्ड लिखा है बस, एंट्रोपी। अच्छा, एक। ये भी ठीक है। दैट इज टू लिटिल यार। Oh, नहीं नहीं, लिटिल से भी ज्यादा है। ओके, बैड लक। So let's only just do one question and finish, wrap it up, I think, because थोड़ी practice करना जरूरी है. So let's take the example of enthalpy of vaporization of benzene. So you're given benzene and the latent, you have to calculate the enthalpy of vaporization. Achha, it is given. So the enthalpy of vaporization of benzene is given to be VAP H is given to be 30.8 kilojoule per mole. The temperature is given to be 80 degree, the boiling temperature, T boiling. And you have to calculate the entropy change first when it converts from liquid to vapor. And second is when it converts back from vapor to liquid. माइनस साइन कर देंगे और क्या, बस दैट्स ऑल। फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। ठीक। ठीक है सर। अब क्या शुरू करेंगे? सर फिर आप क्या शुरू करने वाले हैं? नेक्स्ट चीज क्या होगी?
हाँ जी, हो गया। हम्म। ओके, लेट्स, कहाँ करें भाई, दिख नहीं रहा कहीं। okay. डिवाइड करने थे तो नंबर। हाँ 30.8 अपॉन 88। चलेगा, चलेगा चलेगा, पर समझ आ गया ना क्या करना है। हाँ हाँ। ठीक है। उसमें था भी क्या? और ये बात भी सही है, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं ड्रॉपी में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। नाउ द टॉपिक इज the spontaneity in terms of क्वांटाइटी लिखना है। entropy change. Now the let's link the two. Okay, so let's say if you have a spontaneous process, one, you are doing mixing of two gases on opening of a stopcock. Okay, so they were in separate containers, stopcock mix spontaneously, they will mix स्टॉप को। because yes. Then you have, we also did an example जहाँ पे water के अंदर we had put some ink, blue ink had was put, and वो ink अपने आप फैल जाती है उसके अंदर, right? So you throw ink and the ink spreads throughout because it tends to increase the randomness. Okay, now इसके अंदर ना तो there is a change of matter, so one, no matter exchange. Okay. Second is with the surrounding. Surrounding means surrounding ये जो इसके चारों तरफ surrounding है, okay, universe. And then there is no energy exchange also happening. ये Yet आइसोलेटेड you, सिस्टम में हो रहा है। yet uh, it is not an isolated one. It has all the liberty, but it is not doing anything. So only this is happening. Ink मतलब इस process में, ink डालने के process में, दो gases के mix होने में ना तो कोई energy exchange होती है और ना कोई matter नया create होता है. Nothing is, there is no exchange happening like a product and reactor. Nothing is happening. Two gases mixture बन जाता है बस. That's all. Randomness. Even though these processes have nothing, right? So these two therefore act like this system. So these two processes act like what? They act like isolated systems. सही है. So they will not, yeah, they exhibit the characteristics of an isolated system. Okay. And और कौन सा एग्जांपल है? So but they are however they are spontaneous. जी। However they are still spontaneous. So can you see the link between spontaneity and entropy change? The disorderliness has gone up here, हाँ हाँ। and they are spontaneous also. That's एंट्रोपी a को तो link between the spontaneity and the entropy change, which means if there is an entropy change which is positive, the randomness has gone up, delta S is greater than equal to 0. So there is a positive entropy change that will actually mean more randomness and hence more spontaneity, which is an example here. The idea is that we should not get confused with सर इसमें तो हीट ऐड करी थी आपने, इसमें तो हीट निकाल दी थी, ये तो उससे हो रहा है. ना हीट ऐड करा, ना प्रोडक्ट, ना रिएक्टेंट, कुछ नहीं करा, बिना उसके भी यू कैन सी स्पॉन्टेनिटी. सो डेफिनेटली द रैंडमनेस इज द कॉज ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस ठीक है। process. This is the point being made. And what is most important, because we have used the word isolated system in this. Now, what gets most important is that the enthalpy of the universe change. Okay, something which is surrounding it. Delta S of universe. Okay, so delta S of the system plus delta S of the surrounding. Overall, the universe becomes more disorderly. ठीक है। ठीक है. हम्म। कहने का मतलब है भाई, इंक जो थी वो यूनिवर्स में पड़ी थी, सराउंडिंग में. नॉट यूनिवर्स, यूनिवर्स में तो सभी कुछ है. इंक वॉज लाइंग इन अ बॉटल.
You picked up the ink and you put it in water. What happened? यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इंक बॉटल के अंदर थी तो जी। डिसऑर्डरलीनेस नहीं थी, लेकिन आपने पानी में डाल दिया तो डिसऑर्डरलीनेस बढ़ गई. सो फ्रॉम यूनिवर्स परस्पेक्टिव, द सिस्टम प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी हैज गॉन अप. नेट बेनिफिट इज देयर. सिस्टम वाज वेरी हैप्पी ना कि इंक पड़ी हुई है तो पड़े रहने दो, फिर आपने ही कुछ करा जिससे कि एंट्रोपी चेंज हो गई और तो यूनिवर्स की ओवरऑल एंट्रोपी गेन हो गया. सही है. हाँ। So remember that if you want the spontaneity of a reaction, you also need to consider in it the spontaneity of the surrounding, which means delta S plus delta S surrounding. ऐसा ना हो कि आपने एक बहुत ही दो गैसेस मिक्स थी और बहुत अच्छी उनमें रैंडमनेस थी, बिकॉज वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. आपने उठा के उनको अलग अलग कर दिया और अब आपने उन उन दो गैसेस को अलग अलग कर दी तो ऑब्वियसली आपने डिसऑर्डरलीनेस कम कर दिया, सिस्टम की, यूनिवर्स की आपने रैंडमनेस कम कर दिया. लेकिन आपने फिर ये एक काम करा, इस गैस को आपने वो बना दिया. नहीं सॉले, मान लो दो लिक्विड में इंक और वो पड़ा हुआ है पानी, और आपने किसी मेथड से इनको अलग अलग कर लिया तो सिस्टम वाज ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड, वेरी डिसऑर्डर्ड. यू सेपरेटेड देम आउट and then you evaporated them. You separated them out and evaporated them. When you evaporated them, what happened? The entropy of the universe increased. जी। So कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव आया ना, चाहे आपने you lost entropy when they were liquid. When they were liquid, just 1 second, please. Okay. OTP has to come here. Okay. So what are the conclusions now? Delta S of the universe has to go up. The process is going to be spontaneous. If it is negative, it is non-spontaneous. If it is zero, the process is in equilibrium. So we never worry about only just about entropy of the system, but also of the surrounding. That also needs to be taken care of. Okay. Now let's talk about any numerical which is given in ABC. नहीं। Just give me 1 second. Let me.
हाँ जी, sorry. Registration is happening. So, okay. So here is the way to look at it. Okay, so you have a system, and this is Q system. This is called the boundary of the system. Outside the system, you have a surrounding. If exchange happens, system surrounding loses and the boundary gains. Okay, so this is a thermodynamic system. This is a thermodynamic system and surrounding. So if the system is absorbing a plus Q heat, then the surrounding is losing so much heat. So it's vice versa for them. Right? And we are assuming the process is reversible. So whatever is gained by the system is lost by. So there is something called as a Clausius inequality. Okay? ठीक है. Clausius inequality. Now the Clausius inequality states that energy of universe is constant, but ठीक. entropy is ever increasing. Therefore, delta S universe is equal to delta S system plus delta S surrounding, and delta S surrounding uh, okay. So delta S surrounding is greater than equal to 0. Sorry, not surrounding. Universe. Equality holds when process is likhna, it's very difficult to write in this. When process is reversible. Delta S universe is greater than 0, मतलब less than का sign चला गया. But this is a for an
irreversible spontaneous process. So you should know all the terms and conditions to identify what type of process it is. Delta S universe, if it is equal to 0, then it's a reversible process. If delta S universe is less than 0, then this is a irreversible and non-spontaneous process. Okay. So this is a Clausius inequality. Okay, let's calculate if there are two gases which mix up. Okay, so let's consider one more situation. अभी तक हमने करा entropy during phase transformation. एक हमने वो करा और क्या करा था? Entropy during the process when the phase does not change. एक हमने पढ़ ली Clausius inequality. एक हमने पढ़ ली spontaneity in terms of entropy. ठीक है, तो ये जो टेबल अभी हमने देखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Clausius inequality. Okay, it will help you identify which process or derivation करने की कोई जरूरत नहीं है आपको. Okay, but yes, if you it's an irreversible and non-spontaneous, negative is a red flag straight away. These are two good conditions. At least ये spontaneous तो है और ये तो बहुत ही अच्छा है. Okay, so this equality holds when the process is reversible and spontaneous. ये वाला reversible and spontaneous both. Okay, now let's say what happens when the two gases mix. Okay, so let's consider one more situation. Entropy change during mixing of gases. Okay, so if you have two containers like these, okay, and you are saying that I have N2 moles here, N1 moles here, this is V1, this is V2, and you open the stopcock, this is gas A, and that is gas B. Then the change in entropy will be calculated as the change in entropy of the gas A. First, we will be calculating it. T is the temperature. Okay. Both are at same temperature. T is the temperature of both A system, A gas, and B, and the volumes are V1 and V2 respectively. The entropy is given by NR ln natural log V1 plus V2 by V1. अगर आपको एंट्रोपी ऑफ गैस 2 निकालनी है, डेल्टा एस ए, रिवर्स इट, एन आर एल एन V1 plus V2 by V2, ये निकलेगा. So if you do a delta S total net, so delta SA plus delta SB, it will be greater than 0. So therefore mixing of gas is spontaneous. ठीक है? Okay, let's talk about the factors that influence entropy. मालूम भी है वैसे भी. फर्स्ट, वॉल्यूम चेंज. फेज ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छी तरह पढ़ा हमने. एक्सपेंशन ऑफ अ गैस. ठीक है, एंट्रोपी विल गो अप. सेकंड, टेम्परेचर चेंज. व्हाट विल हैपन? ऑसिलेशन इंक्रीजेस. हायर द टेम्परेचर, larger is entropy.
We've already done this. That means if you add heat to a system, the kinetic energy or the oscillatory energy, something will go up and it will distribute among each of the molecules, resulting in more randomness. Third, physical state. Physical state. So you can distribute kinetic energy to different gas molecules, but there is a way to do that. Okay, so if a gas has more entropy as compared to liquid or solid, तो जो भी आपके changes होंगे, so if you do a phase transformation, okay, so phase transformation will always be accompanied by a change in entropy. ये भी हमने पढ़ा हुआ है. फोर्थ जो हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अभी हमने इंडिकेट द साइन में पढ़ा था. So if the number of particles increases on the right hand side, delta Ng is greater than 0, you will get more randomness. Then what else is there? हाँ, अगर ये particles increase हो रहा है number of particles increase कैसे हो सकते हैं? Number of particle increase. That's weird. Okay. Let's think about it. ये moles नहीं है. So if the number of gaseous moles increase, जो मैंने लिखा है वो number of gaseous moles है. So fifth is if the number of gaseous moles increase. Again, the randomness will go up. Any other factor that comes to your mind? Kshitij, you're there? I think you're on mute or you've gone off to sleep. No, I was on mute. Okay. Strange, yeah. Camera is off, mute. मतलब what is going on? Nothing. अच्छा. हाँ जी, और कोई फैक्टर तो नहीं हो रहा, सारे हो गए. नहीं. हाँ. Okay, so we have done entropy of physical change. Let's talk about entropy of chemical change. ठीक. I'm going to the next page. I think ये page भी ink किसकी तंग कर रही है. Entropy of chemical change. Yeah, this is a lengthy topic to study. C plus D. Delta NEET वालों को इतना लेंदी नहीं होता. SC plus SD वहाँ तो minus. नीट लेवल पे नहीं है. नहीं. You will not find a lot of this stuff in board or school. Some of the stuff, not all. नीट वालों को तो क्लॉसियस का पता ही नहीं होता क्या है. सो ये हो गया आपका डेल्टा S इज इक्वल टू सिग्मा S प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा S रिएक्टेंट्स. ठीक है. ऑल्सो ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हमें जनरली मालूम है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी फॉर ए रिएक्शन with temperature and pressure. ST2 minus ST1 is given by integral of T1 T2 to NCP dt. Okay, so if there is a reaction that takes place which is AA plus BB giving you CC plus DD, then delta ST2 minus delta ST1 is given by integral of T1 to T2 delta Cp reaction dt by T is equal to delta Cp integrating reaction. Log का बड़ा use है ln T2 by T1. This is when there is a, you can see delta T is
delta Cp has no temperature term. So integration में बाहर ले लिया था हमने. So this is for the reaction when temperature is temperature is changing and pressure is constant, because this is molar heat capacity at constant pressure, Cp. So this case I have done is for constant pressure. At constant temperature, Sp2 minus Sp1. So pressure is varying now to P1 to P2 in RdP, okay, is equal to delta Ng R log of P1 by P2. So this is delta S P2 minus delta S P1. Okay, remember, entropy of solids and liquids does not change with हम गिब्स pressure. कब करेंगे वैसे? जब तक ये खत्म नहीं हो गया यार, यू कांट हेल्प इट. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही वही है. कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, मतलब इफ यू मीन व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज गिब्स, बट सो लेंदी लेंदी लेंदी. इतने सारे फैक्टर्स हैं. कांस्टेंट प्रेशर पे अलग है एंट्रोपी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अलग है. ओ मैन, लुक एट दिस फैक्टर्स. तो मेमोराइज भी करना है, टू प्रिपेयर आल्सो. ओके, let's do some question. So if I, okay, so let's say examples. I'm going on the next page now. Examples. So if I give you a teaspoon of table salt, okay, so you're given a teaspoon of table salt. So you pour it into a glass of water. The salt dissolves, and during this process, it's endothermic reaction. So it's not very favorable. Will you say that this is a spontaneous process, although the heat is absorbed during the process? नो. अरे, spontaneous ही होता है. You put salt in water, it will dissolve automatically. Oh yeah, okay. Yeah. I'm just sorry. Because the Randomness बढ़ disorderliness जाती है. wins. हाँ, हाँ, disorder. जीत जाती है. Although अच्छा, you're eating something. Okay. अकेले अकेले बेटा. अच्छा बेटा. सही है बेटा. एप्पल खाओगे आप? येलो रंग का होना चाहिए. येलो. और कौन सा होता है एप्पल? एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है, येलो एक तो नहीं रेड होता है. नॉर्मल येलो होता है. मैं येलो एप्पल खाता हूँ. माय फेवरेट इज येलो. You're eating red, small, red, big. रेड. बिग. Small, big, medium. मीडियम. सही है. कश्मीरी या शिमला कश्मीरी. या अमेरिकन. मतलब ड्रामा देखना हो तो उस वेबसाइट पे जाके देखो. अमेरिकन होता है ओके, तो बहुत महंगा होता है फिर भी. मतलब वंस इन अ वाइल जैसे टेस्ट के लिए कि खुद भाई ये क्या अमेरिकन है, इसके अंदर टेस्ट तो करने में अमेरिका अमेरिका लिखा हुआ है, तो मैं कई बार मंगा के एक्सपेरिमेंट करने के लिए देखता हूँ. बट एनीवे, condensation of steam into liquid. What type? Spontaneous, non-spontaneous? Condensation of steam into liquid. नेगेटिव हो रही है एंट्रोपी. हाँ बिल्कुल है. नॉन स्पॉन्टेनियस. Yes. Agreed. ठीक है. Sublimation of a solid. स्पॉन्टेनियस. Yeah. Positives. Entropy is positive. Predict the sign of entropy. Yes, spontaneous. Whether or not it will be spontaneous, we will see it in a while. But yes, broadly answer is yes. Entropy is positive. Okay.
Good, 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 good. Okay, so I'm giving you a reaction and you have to calculate delta S. So the reaction is 3NO2 plus H2O liquid, वो गैस है, gives you 2HNO3 plus NO gas liquid. ठीक है? No, this is a pollutant. आजकल NO2, तो एयर pollutant पानी में मिक्स होके इट प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड. तो कई जगह रेन एसिडिक रेन होती है नाइट्रिक एसिड की. यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड रेन at in obviously joule per Kelvin basis. So what is given to you is the products which are HNO3 and all that. HNO3 की जो डेल्ट S है, okay, S of HNO3, the molar entropy of HNO3 is 155.6 joule per mole per Kelvin. The molar entropy of NO, एनो. हाँ जी, नो. जो ये है, ये हाँ नो कह सकते हो, is given to be 210.6 joule per mole per Kelvin, and the molar entropy of NO2 is given to be 240.5. The molar entropy of H2O is given to be 69.96 joule per mole per Kelvin. Your job is to find the delta S of this whole process of the chemical reaction, so to say, which is delta S product minus delta S reactant. That's all. But there is a catch here which you have to be careful of, because these are molar ones. Please ensure that when you solve them, you just don't do blindly subtraction and addition. The coefficients also will get adjusted. So if it is 3NO2, the 3 से reactant side, मल्टीप्लाई होगा. 3 से multiply होगा. Yes, that's the point being made. Okay, question to you. So boiling of a liquid happens. Okay, so boiling of a liquid happens. And when you boil the liquid, you find that the entropy of its vaporization is coming out to be 68.3 joule per Kelvin per mole. And the enthalpy of the vaporization comes out to be 35.65 kilojoule per mole. Question is, what is the boiling point of this liquid? ओके. Yo. सर ऐसे ही बता दो. डिवाइड करना है. डेल्टा एस इज डिवाइड. इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी. सर वो हो जाएगा आपका 35.65 अपॉन 68.35. गलत. मुबारक हो, मुबारक हो. दिस तो इज ठीक व्हाट आई है, मैं वांटेड टू हियर. हाँ कर चलो लो, ठीक ठीक. कर लो. हाँ लिख लो, लिख लो, सो दैट संतुष्टि हो जाए जरा. गलत, गलत, गलत. हाँ लिखो, 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 लिखो. ठीक है, मुंह से जो बोल दिया वो तो गलत ही था. ओ सही कर लिया भाई, सही कर लिया. फाइनल आंसर क्या आ नहीं, जाएगा? आंसर हाफ डिग्री आ जाएगा. हाफ डिग्री पे बॉयल हो रहा है लिक्विड भाई, पता नहीं कश्मीर में बैठ के हो रहा है. हो भी सकते हैं. बेटा सेब कहीं और तो नहीं घुस गया ट्रैवल करके? यहाँ पे थप्पड़ मारो अपने गबल में, निकल बाहर. दिमाग की नसों में घुस गया. किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट कर लो.
एक मिनट। हाँ जी। मिनट ही मिनट है जी, जितने मर्जी लो। मिनट ही मिनट है। मिंट मिंट। मिनट मुझे लगता है एक क्लास और लगेगी इसमें। तुम्हारी क्लास स्कूल में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करवाया है? हाँ मतलब गिफ्ट्स वगैरह के अंदर ही था। गिब्स में नहीं होता, अलग होता भाई। गिब्स। अलग। गिब्स अलग फिर है। तो नहीं कराया होगा। कराया होगा तो 2 क्लासें और लगेंगी। खत्म हो गए जाके लेट। क्योंकि हम तो भाई लाइन बाय लाइन डिटेल में कर रहे हैं, टाइम नहीं पास हो रहा। बहुत लंबा लंबा चल रहे हैं, बहुत एक एक टॉपिक के ऊपर। पर इतनी डिटेल नहीं करते, मैं स्कूल का खत्म कर लेते फिर स्कूल का ही रह जाएगा। स्कूल का तो मतलब ये है ना कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मत पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टाइप से ना। मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता किसी को। एक एक लाइन जब तक पूरी नहीं होगी मैं तो आगे नहीं फिर चलूंगा डॉग्स उसमें। भी रह जाएगा, फिर कुछ नहीं। कोई नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, डोंट वरी, हो जाएगा। इसकी असाइनमेंट भेज दूंगा मैं, करना शुरू कर दो। गिब्स बहुत आसान है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड गिब्स, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रह गया हमारा। इसको भी इससे कर लो ना, ये क्या है? ये जूल है कि किलो जूल है? ये 68.35। कौन से वाला? ये ये जूल है। ये जूल है, अच्छा। जी। जी जी, 68.3 तब भी थोड़ा जी, मुबारक हो। अजीब आ रहा था आंसर। हाँ हाँ। रेड फ्लैग था, मैं तो बड़ा खुश था। आता है जी, कर लो डिवाइड। आसान नहीं होता। ठीक है, मेरे ख्याल से वी हैव टू क्लोज दिस ऑन मंडे नाउ। वी डोंट हैव अ चॉइस, चाहे लंबी क्लास करनी पड़ जाए। वी विल हैव टू क्लोज दिस, बस सिंपल। कंप्लीट करना ही है, जितना मर्जी टाइम लग जाए। नहीं। तो फिर स्कूल का मुझे रह जाएगा, अच्छा तो नहीं फिर रहेगा। जल्दी से जल्दी। क्या रह जाए, क्या क्या रह गया? डॉग्स फिर मुझे उसकी प्रैक्टिस भी छोटा करनी है सा ना नहीं पहले है, से। छोटा सा नहीं है। हाँ, टाइट्रेशन है इसके अंदर में, वो हाँ, तो मतलब टाइट्रेशन क्या भी होता है। है टाइट्रेशन के अंदर? क्या व्हाट्स अ बिग डील इन टाइट्रेशन? पानी का कलर पिंक करना होता है बस। हाँ, बस कर देंगे, चिंता ना करो, हो जाएगा। कुछ नहीं है उसके अंदर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है, बहुत एक्सटेंसिव लंबा चैप्टर है ये एंट्रोपीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेडॉक्स है। रिएक्शन अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। अभी जाके ऑर्गेनिक में यूज होएगा। कहीं ना कहीं जाके यूज होते हैं ये। केमिकल एनर्जेटिक नहीं, सॉल्यूशंस। मैं कह रहा हूँ डॉग्स रिएक्शन भी ऑर्गेनिक में काफी यूज होएगा। ओके। केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री कट गया जेई मेंस के सिलेबस से पूरा। केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन। मैं तो चाहता हूँ कि ना फिजिक्स में से ना वो कट जाए बस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नहीं कटेगा वो तो 8 नंबर का, 10 नंबर का ही आएगा ही आएगा। मेरा काट तो देते। फेवरेट है वो। को फेवरेट मुझे बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। आई हैव टू गो नाउ। लेट्स मीट नाउ एंड क्लोज इट। इसको खत्म कर देते हैं यार अब, बस बहुत लंबा खिंच गया ये। बहुत परेशान कर दिया एंट्रोपी ने भी। एंथैल्पी तक, एंट्रोपी तक पहुंचते पहुंचते ही वो हो गया। प्लीज रिवाइज, एग्जैक्टली। जहां तक पढ़ा हुआ है कि कंटिन्यू टू रिवाइज।